तुम तीनों का like let's say in the next 3 to 5 minutes, I know it's a very difficult question, but in the next 3 to 5 minutes, if you were to summarize your entire MBA experience, तो कैसे करोगे? Like how was it for you? स्क्विड गेम देखिए, नहीं, वो जो नेटफ्लिक्स पे है। नहीं, नहीं मैंने नहीं देखी। वो आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस तो वैसे ही भाई, इट वाज एग्जैक्टली लाइक, मुझे ऐसा लगा था कि हम एक वो बहुत बड़ा सा एक जगह है जहाँ तुम गए हो, वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सब दौड़ रहे हैं, everybody is just, there is always a, like, you are at your A game from the first minute that you get to not even the campus, to the pre-campus जो meets होते हैं ना, conclaves होते हैं जो, जहाँ तुम मिलते हो तुम्हारे बैच से, तब से तुम्हें अपने A game में होना होता है, and you're competing, you're getting judged, like I'm just speaking about IMA, you're getting, and I'm being extremely candid, right, you're getting judged, उधर से ही डिसीजंस बन जा रहे हैं कि अच्छा ये ग्रुप्स बन रहे हैं, माइक्रो ग्रुप, सीए वालों का एक ग्रुप बन जाता है एज ऑलवेज। बिल्कुल भी एज ऑलवेज नहीं है। हम लोग कभी ग्रुप्स नहीं बनाते। अच्छा, सीए वालों का ग्रुप बन जाता है, पीपल फ्रॉम एसआरसीसी और डीयू का एक ग्रुप बन जा रहा है, पीपल आर पिचिंग ऑन व्हाट क्रेडिबिलिटी यू आर गेटिंग टू द टेबल, राइट। फ्रेंड्स बनाने नहीं आता है वहाँ कोई, लाइक पीपल गेट ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप्स बट पीपल आर देयर विथ अ पर्पस, सो एवरीबडी इज देयर to prove themselves and to take or learn out of you, right? So to sum it up, it's like the Squid Game. तुम अपना best foot forward दिखाते कुछ हो, करते कुछ और हो, right? You are competing every minute. You get opportunities to prove yourself, right? In academics, in extracurriculars, in internships, in case competitions, in sports, in culture, everywhere. You stand out, make your own place, right? Emotionally, it's a very, for me at least, was a very strong journey. It was a very taxful journey because I had not seen so much competition because I'm not from IIT. I'm a Bombay girl, right? So it was extremely challenging because seeing a lot of people running behind grades, there is also this concept of relative grading, right? तो अभी तक तो बचपन तक यही, तुझे 90 आया, मुझे 90 आया, बेस्ट हो गया। वहाँ पे ऐसा नहीं है, द फर्स्ट पर्सन इफ ही इज गेटिंग अ 99 हैज़ द बेस्ट ग्रेड्स एंड गेट 99 और तुम्हें उससे 0.5 भी कम आ गया, तुम्हारा ग्रेड गिर रहा है। सो द कॉन्सेप्ट इज ईदर यू बी द बेस्ट, गेट द बेस्ट स्कोर, or your grades are going to go down, and that is like a, you know, there's a ripple effect, right? Then you're not getting calls from the best companies, you're not sitting with the best people who are having the best calls from those companies, and yeah, that's how it is. So that's the hard truth of this place. Having said that, the good stuff, um extremely fun, extremely, it makes you this resilient person, completely ready for the next 10 years of your life. वो डायलॉग था वो कोटा फैक्ट्री का कि आईआईटी, मतलब वो कोटा तुम्हारे, तुम कोटा छोड़ दोगे बट तुम्हारे अंदर से कोटा कभी नहीं जाएगा। इट्स द सेम वे विथ योर आईएम्स, तुम 2 साल वहाँ पे रह के आए हो ना, तो तुम निकल जाओगे आईएमए से, but that is never going to leave you because they're going to teach you how to live the next 10 years in your corporate journey. They're going to prepare you for extreme harsh environments. There's also this concept of surprise quizzes. I don't know if that happens with them, right? What a surprise quiz is basically, हर दिन 3-3.5 घंटे का क्लासेस वगैरह अटेंड करने के बाद रैंडमली तुम्हें बोला जाएगा कि ये टॉपिक का ये क्विज है विच इज़ ग्रेडेड, ठीक है? और ऐसे मैसेजेस तो आ ही जाते हैं, बट कैंटीन के, मतलब जहाँ हमारा मेस होता है जहाँ पे हम खाते हैं, वहाँ पे एक बड़ी सी चिट्ठा लगता है, तो तुम ऐसे खड़े रहते हो रोज, कैसे तुम किसी क्रश को देखोगे ना जो दूर से कि कोई आ रहा है, वैसे तुम उस प्यून को देखोगे, भाई तू आ रहा है कि नहीं, आज तू आ रहा है कि नहीं, एंड देन यू गो एंड ईट फूड. सो ऑल दीज मोमेंट्स really make you closer to your batch. It also makes you change your mindset a little bit that anything and everything can happen. You have to be ready for whatever is going on. Having said that, बहुत पार्टी करते हैं बिकॉज बहुत सारा पढ़ाई और बहुत सारा केस कंपटीशन ये सब करने के बाद यू नीड टू चिल विथ योर फ्रेंड्स. पार्टी कैसे करते? गुजरात में है ना? आओ कभी गुजरात. मतलब इट्स, यू हैव योर वेज टू पार्टी यार. गाने, like people just chill in each other's room. We have one of very big festivals called Chaos that happens every year. There's also Red Brick Summit that happens every year. There's also Sangharsh that happens, which is basically the competitions of the top IMs. So हम लोग, there is an event जहाँ पे तुम
sports may you are competing with each other. So all that keeps happening. There's also a lot of nights that happen. There's tea night, there's pro night, there is post placement night, and तो तुम जिसके साथ बैठ के like that's the unique thing about IMA. You study together, you're surviving together, you're getting placed together, and you're definitely even crying together at some days. So yeah. Is it true that first 3 months में सिर्फ 3-4 घंटे की नींद होती है? Yeah, it is because मैं आपको बताती हूँ क्यों ऐसा होता है. Is because पहली बात आपके पास you have almost six subjects, right? And it's going fast. ऐसे नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आप समझो एक एग्जाम्पल ये है कि इंजीनियर है, ठीक है, उसको जो आपने CA में जो 12th में पढ़ा होगा, ठीक है, जो बेसिक 11th-12th में पढ़ा वो उसका एक क्लास था. दैट्स वन सेशन. तो उस स्पेस में एक नॉन पर्सन जिसको कुछ भी बैलेंस शीट का भी नहीं पता, उसको कोई आइडिया नहीं है एसेट लायबिलिटी क्या होता है, उसको 1 घंटे में सब पता चल जाता है. दैट इज़ द पेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. और वही हो रहा था वहाँ पे. एंड तो इवेंचुअली आप क्लास के अंदर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई आप बाहर करके आ रहे हो. यहाँ पे तो आप यूर फाइटिंग, दिस इज़ अ बैटल ऑफ जहाँ पे 40% कुछ कोर्सेज पे देर इज़ अ क्लास पार्टिसिपेशन रेशियो, राइट? You're getting graded on how well you're speaking in the class, how better points are you getting at the table, right? How can you stand on your ground, etc. So you're prepping before. So your prep takes a lot of time, one. Number two, you're prepping for your internships that are coming through. So you're making your CVs because that is the only way you're getting tested by these companies. So that's happening. You're getting into clubs. That's happening together. So that's also very important. Apart from that, you're trying to survive and make connections other than just all of this that's happening. So all in all, sleep deprived हो जाते हैं लोग, but I think that place has that अलग, the air and the atmosphere is so energy charging sometimes that it doesn't feel like you're just on the go. You're so in the zeal to be giving your best shot in the class, so you do that. Got it. Mac, how was it for you? Yes. So I think this is a tagline for ISB that we use. It's called a year of transformation. We as students, we also use it. The college also uses it, and it's very true. Like say Mehak a year back versus now is a completely different person. I think जो चेंज हुआ MBA करके, MBA के पहले ये था कि मुझे पता था कि हाँ हर चीज़ के बहुत पर्सपेक्टिव्स होते हैं, बट जब B स्कूल में मैं गई तो मुझे पता चला कि सिर्फ होते नहीं है, वो प्ले आउट करते हुए देखे मैंने पर्सपेक्टिव्स उस सिचुएशन में, क्लास में, कोई असाइनमेंट में. एंड ISB हर चीज़ के लिए आपको कोई ग्रुप सेटिंग में कंपेल करता है. आपका स्टडी ग्रुप होता है, आपकी असाइनमेंट सबमिशन ग्रुप में होती है, बहुत कम इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है. सो लाइक इट विल पुश यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एवरी सेकेंड, एवरी मिनट. कोई बहुत एक्सट्रोवर्टेड पर्सन भी होगा ना, उसकी भी लिमिट होगी सोशलाइज करने की, लोगों से बात करने की, बट दैट इज़ वॉट इट टीचर्स यू कि ना चाहते हुए भी वो चीज़ आप कैसे करोगे द बेस्ट. दैट्स वॉट शेप्ड मी ड्यूरिंग ISB. आई थिंक द फर्स्ट 3 months एट ISB आर कॉल्ड द कोर टर्म्स. कोर कोर्सेज कराते हैं उसमें. एंड हाउ इट स्ट्रक्चर्ड इज़ कि 8 टर्म्स होते हैं, एंड हर टर्म में 2 एग्जाम्स होती है, मिड टर्म एंड एंड टर्म. सो प्रैक्टिकली एवरी 15 days यू आर गिविंग एन एग्जाम. और फर्स्ट 3 months तो ऐसे ही लगता है कि किसी ने प्रेशर कुकर रख दिया है, एंड यू आर जस्ट रनिंग, यू आर जस्ट स्टडिंग, यू आर कैचिंग अप ऑन सो मैनी थिंग्स. एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मेरे को अकाउंट्स, फाइनेंस बिल्कुल नहीं पता था. DCF मॉडल क्या होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस में, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं पता था. एंड देर आर पीपल हु आर CA, CFAs and like rank holders in my class. So at the end of the day they start teaching you. So there is something called as peer to peer learning. तो वो sessions लेने लगते हैं, आप उनसे डाउट समझते हो. तो all this is something जो B स्कूल में आके समझ आया. उसके पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था. P2P लर्निंग क्या होती है, peer to peer लर्निंग, मुझे कभी नहीं पता था. So I think all of those things sort of change you. Plus so that's I would say that at ISB pressure है, hectic है, बहुत है, बट एट द सेम टाइम बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो आप. इतना अच्छा कैंपस है, पर्सनली भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हो, क्लब्स है, कमिटीज़ है, यू मेक फ्रेंड्स, यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स.
So yeah, I think placement season तक pressure होता है थोड़ा hectic होता है, because obviously like she said that it's competitive. You are in a place with the best of the minds, with people who are like experts in what they are doing. So you will always feel that, you know what, how can you be better, but also you can learn so much from other people. And एक बार placements खत्म हो जाती है, फिर the last 3.5 months, 4 months is a breeze. Like my best friendships at ISB happened during that time. Best experiences happen post placements. There is a tradition of parties. पोस्ट प्लेसमेंट गोवा ट्रिप होती है, तो सब गोवा जाते हैं, पूरा ISB गोवा होता है वहाँ पूरे पे। 900 लोग गोवा। हाँ, मतलब वो उस 1-2 हफ्तों में एवरीबडी यू विल मीट सो मेनी पीपल फ्रॉम ISB ओवर देयर. So it's like that. I think it's a beautiful journey, like transformation in its true sense, I would say. And yeah, like as it depends. Like my friends also, the closest friends that I have from ISB, वो एग्ज़ाम वाले दिन जब आप पढ़ रहे हो रात के 4 बजे तक, दोज आर द बेस्ट फ्रेंडशिप्स दैट यू हैव, बिकॉज तब आप रो भी रहे हो साथ में, कुछ समझ नहीं आ रहा तो भी साथ में मत रहे हो कि यार ये नहीं समझ आ रहा है, क्या करें, गिव अप भी साथ में मार रहे हो, स्ट्रगल भी साथ में कर रहे हो, हार्ड वर्क भी साथ में कर रहे हो. एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट मेक्स अ डिफरेंस. इन माई लाइफ आई एम अ वेरी कोर इंजीनियर एट हार्ट. मुझे पीछे बैठ के सोने की आदत है लेक्चर में. बट ISB जाके जब वो सर क्लास पार्टिसिपेशन कराते, नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे, 50% ऑफ योर ग्रेड इज क्लास पार्टिसिपेशन. तो जब वो जाग के सुनते हो ना, तो दैट, एंड व्हेन अदर पीपल ऑल्सो आंसर, दैट पर्सपेक्टिव दैट चेंजेस, वो आई थिंक आई कांट मेजर इट इन एनी अदर फॉर्म. सो आई थिंक ब्यूटिफुल राइड. आई थिंक इट्स अ रोलर कोस्टर राइड फॉर श्योर. So Akshita, like let's summarize your experience. So it was a very interesting experience for sure. मतलब came out an individual, you know, which like who's equipped for whatever corporate challenges are there. कुछ ना कुछ होता रहता है. Came out even with the tolerance for people. कि हर तरीके के लोग मिलेंगे. You know, people from all walks of life. Some of them who will really test you, right? तो उनको कैसे मैनेज करना. एंड आई थिंक लाइक इट्स बेस्ट टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, राइट? नॉट एवरीवन विल फंक्शन एज यू वांट देम टू फंक्शन. देयर विल बी पीपल जो कोचेबल नहीं है, कोई अच्छे से फीडबैक नहीं लेता है, बट देयर ऑल्सो बी पीपल हु नो हाउ टू कोलैबोरेट. सो यू नीड टू नो हाउ टू वर्क विद एवरीवन, स्पेशली इफ यू वांट टू बी अ लीडर और इफ यू वांट टू लाइक राइज अप द रैंक्स. You need to know कैसे सबको मैनेज करना है. So that is like one very important skill that personally I learned. First 2-3 semester, like steep learning curve, like even for someone like me who's worked in startups and has seen that madness, it was like, you know, there was that learning curve. Sleepless nights, case studies hai, in depth साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं, we are trying to figure out अच्छा what's the best, and there's no right or wrong. Like with case study method, the thing is कि it's about like how you can come up with a solution to whatever has been asked in the case study, and how can you defend that. So just thinking, brainstorming, digging out data, numbers देख रहे हैं, number crunching कर रहे हैं, फिर उसमें allocate कर रहे हैं काम उसमें. Then first 2 semester तो I had like solid arguments with my team members and everything, so much so that like I was like, I don't want to work with you, and you know, all of that was escalating. But then eventually like came around, and again like everything was being done in groups. Every presentation or build your own business or any like, you know, activity, it was a very group oriented approach, and rightly so, because ultimately काम तो तुम्हें लोगों के साथ करना है ना. There are very few roles जहाँ पे individual contributor होते हो तुम. तो I think that way these 2-3 years 1 year full of collaboration. There were like business courses, then there are soft skills courses, then there are like how to craft a brilliant resume, you know. So हर front पे कुछ ना कुछ चले जा रहा है. Then there are like trips also happening, you are partying also, रात को terrace पे बैठ के साथ में chill कर रहे हो. And I agree to like Rudra, everyone comes in with a purpose, and like on the first day everyone would be like the most polished self. You know, everyone would be like, okay, yeah, I've done this and I've met this person and I founded that. And like 6 months into it, like that person, matlab, you will see them in their most vulnerable, like, you know, you will just
think that there's a drastic difference from how you saw them on day one versus now. And how that helps is that you see them not as like this perfect individual, but you understand that okay, we're all humans and all of that. And you sort of, that's when I feel like when you're vulnerable or when you can actually expose yourself enough, that's when like some of the best friendships also formed, which like later go on to help you. So again, like how I saw initially what people were versus how they evolved, or how like uh, things played out, that was a very interesting journey to witness. And then like on the course front, 5-6 courses a term, and like we had 7 terms. तो मार्केटिंग चल रहा है, फिर देन DCF चल रहा है, देन एडवांस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज हैपनिंग, देन मार्केटिंग में कुछ चल रहा है. Then post that, like based on the career pathway that you've chosen, there are also like all of these one-on-ones and these group sessions where they are teaching you if you want to go in product. So you're doing like product tear downs and everything. If you're going in marketing, so you're like literally analyzing ad campaigns बैठ के. तो ऑन एंड अबव भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी. एंड देन लाइक पीपल टेक इनिशिएटिव्स, कोई लिटरेचर में कुछ कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स सोसाइटी बना रहा है. वी वर द फाउंडिंग कोहोर्ट, राइट? सो देयर इज लाइक सो मच टू बी स्टिल डन, थिंग्स आर नॉट एज एस्टैब्लिश्ड. सो पीपल टेक दैट इनिशिएटिव, पीपल आर डूइंग थिंग्स. So I think all in all, like these 2 years, I don't know why I keep saying 2 years. This 1 year, we've discussed so much about 2 years. So this 1 year was like full of learnings. One like particularly what I remember is build your own business. तो फिर ऐसा होता है in first term, all of you, all the teams, there'll be like 14-15 teams. You need to come up with a business idea. And you need to like implement it. You need to clock in revenue, online channel se and offline channel se. It's usually like a D2C product, and you have to research, you have to market it. And that was like very memorable for both like good and bad reasons. Bad because it took us so much time as a team to decide only कि क्या बिकेगा, what is something that people will buy, what is something that we should zero down on as a team. So usme there were so many opinions कि अरे नहीं, why do you want to do this, why will this sell? And imagine there are like both females and males in the same group, right? Yeah. So of course their ways of thinking are different. They are from different walks of life. So in my group, for example, I pitched in tote bags because I know, okay, like people do use them, right? For let's say a casual day out and everything, someone would want a quirky tote bag, and I had to like really pitch it in till like everyone was convinced enough. Then sorting out the supply, तो कोई supply sort out कर रहा है, मैं design कर रही हूँ बैठ के खुद से. Then we are printing it out. Then we are like literally going on Church Street to sell it, and like What just was the duration of this course? 1 year. No. This particular subject, this Build your own business. Yeah. So this spanned across like 1 to 2 terms. Yeah. Yeah. But this is really nice. It's very interesting. Yeah, and we clocked in about like 2 lakhs of revenue Wow. from this. So मेरी team का highest गया था, and like the kind of learnings we had, and see, it's like micro level पे these learnings are there. For example, we learned कि ठीक है, we went in with the assumption कि women will buy our products majorly, which stood true. Men were also buying, but 80-90% were women. So we thought, why to dilute attention at all? Let's just like keep focusing on them. So we doubled down on that. फिर समझ आया कि कौन कैसा खरीद रहा है. We got like some gender neutral tote bags, which we realized कि लोग देख के they'll be like, oh, that's smart, that's quirky, but nobody will buy it because वो कहीं का नहीं रह जाता. So all of those learnings, and then like then deciding whether I want to continue with it or not. So I think that was like a big hit. We got some insights. Tote bags, some of them do not have zippers, so things like tend to fall off, like those canvas tote Yeah. bags. So we added those zippers, and we actually got sold out. We had to like restock twice, and both times we were just like all sold out. So very micro level business, but teaches you a lot. Teaches you, okay, that how do you, if like today I want to start a business from scratch,
क्या क्या मैं करूँगी, मैं सप्लायर ढूंढूंगी, मैं ढूंढूंगी कि क्या चल रहा है, सो वी रिसर्च लाइक Amazon keywords and everything. Then I will probably see who's buying, तो मैं उस कस्टमर को और समझूंगी, I'll see कि मैं क्या और वैल्यू ऐड कर सकती हूँ उस प्रोडक्ट में. So did all of that, and definitely like there were sleepless nights and all, but I think eventually you get the hang of it. You also learn how to manage your time better. You also understand starting में सबको full on networking भी करनी है, सबको एकदम at the top of the class भी रहना है, सबको you know like any professors coming in, everyone will just go and speak, and then by semester 3 you just see कि you know people are like chilling now. Yeah. They are like chilling in life, which is good because ultimately you need to sustain your energy across like this 1 or 2 years. So that's how my time over there was. Yeah, I just like to add something here. So I remember when I had gone to Mesa School of Business, so I was taking a module on the creator economy, content, मतलब कैसे content creation करते हैं, इसमें क्या होता है. तो मेरे को याद है, so mine was like I think an additional subject, कुछ optional subject जैसे किया था. Mandatory for marketing. करेक्ट, हाँ, एंड मैंडेटरी फॉर मार्केटिंग. एंड वहाँ पे मेरे को बहुत मतलब इंटरेस्टिंग, मैंने क्या किया था कि बोला था, असाइनमेंट में दिया था, एवरी वन हैज़ टू रिकॉर्ड देयर ओन रील्स नाउ एंड दे हैव टू सेंड इट, एंड आई एम गोइंग टू ग्रेड कि इसमें हुक कैसा बेटर हो सकता है, CTA क्या होगा, एंड ये ड्यूरेशन में वगैरह मतलब कैसे यू कैन मेक द ऑप्टिमल रील इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, एंड सबको ग्रेडिंग वगैरह दिया था. एंड देन यूट्यूब वीडियोज़ एंड इंस्टाग्राम रील्स प्रोजेक्ट किए थे प्रोजेक्टर पे, एंड मैंने बताया था कि इसमें क्या बेटर हो सकता है, हुक में क्या बेटर होगा. सो एकदम ऐसे प्रॉपर मास्टर क्लास लिया था, एंड आई हैड जस्ट लाइक टॉट कि ओके कंटेंट में मतलब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, हाउ डू यू ग्रो ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स. तो वो काफ़ी मतलब मैंने भी फर्स्ट टाइम किया था बाय द वे. Did you एंड get to learn anything from those reels? I did get to learn a lot of things, and I realized one thing कि analyzing data is something which is very important, which I did because of that master class. तो पहले मैं क्या करता था कि ठीक है रील्स अपलोड कर दिए, बट अभी every month we analyze the engagement rate on every reel, and the way we calculate engagement rate is that Instagram पे if you click on view insights you get the likes plus comments plus saves plus shares. Right. This total divided by the number of views. तो ये होता है एंगेजमेंट रेट. एंड एवरी मंथ माई टीम विल प्रिपेयर दिस एक्सेल शीट, एंड उस पर से हम लोग डिसाइड करते हैं कि मीडियन के ऊपर के जो एंगेजमेंट रेट्स है वही टॉपिक्स पे फोकस करेंगे इन द नेक्स्ट मंथ, ताकि मतलब उससे टॉपिक आइडियाज़ वगैरह आते जाए. एंड दिस वी डू इट फॉर डिफरेंट हैंडल्स ऑल्सो, लाइक नॉट ओनली माइन बट ऑल्सो हैंडल्स लाइक फाइनेंस क्रिएटर्स जो है मेरे मतलब कॉम्पिटिशन में, तो उनके हैंडल्स भी स्टडी करते हैं. Okay. That's nice. सो दैट इज समथिंग विच आई रियलाइज आफ्टर दिस सेशन. Exactly. I mean, I think like those courses were very relevant. You know, like to your point, just say you came in to teach that content course. Similarly, like we had all of these industry leaders only. You know, people who've been there, done that, 10-15 years they've been into it. VCs also, you know, VCs from like I'm not sure if I can name them, but like different like top-notch VCs. Right. Sharing their insights, sharing their hypotheses, and imagine like how priceless those insights are, right? Something that you wouldn't get access to otherwise. So I think like it's about that access thing also, which all of us got in great amounts. Then Urban Company's founder and Vidit Atre from Meesho, all of them came in. You know, I think like just getting to sit on the same table as them, just learn from them, that just makes a lot of difference than theory. So But having said that, the difference, like what I feel in IIMs was like, so we also have, of course, this very good, rich faculty. Like one of our, like faculty, like Jayant Verma, Professor Jayant Verma, he was the person who was sitting and creating the monetary policy, and he's coming in like telling us about it, etc. But the difference here is that these guys are staying with us on the same campus, right? So it's like I still am in touch with my professor who I connected. He calls me every 3-4 months and be like, अब क्या कर रही है? And that's the language he talks me कि देखो बोला था छोड़ने के लिए, अब तो क्यों नहीं छोड़ रही है तूने कमेटी? And that's the relation I've created with him, right? And that is something that I think everybody should experience, because in class learning is something else, but when you are sitting with these people, even our alum, right, when they come, they अच्छा खासा एक हफ्ता रहेंगे, वही कैंटीन में बैठ के खा रहे हैं, वहीं आप लोग उसके साथ बात कर पा रहे हो. So those conversations are also very rich. So in class learning and outside is, it is another experience when you're living with such faculty, and you are experiencing these alum coming on.
Yeah. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.